अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं सब दोस्त? तो आई होप कि आप ठीक होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे। तो फ्रेंड मैं हूं सज्जाद और मैं हूं मोहम्मद नईम। तो बांग्लादेश से इतना प्यार देने के लिए, तमाम कंट्री से जहां से आप लोग हमें देख रहे हैं, इतना प्यार देने के लिए सबसे पहले तो थैंक यू, दिल की गहराइयों से आपका बंडल ऑफ थैंक्स। तो फ्रेंड आज जो हमने वीडियो देखना है वो मतलब बांग्लादेश से हमारे एक भाई हैं माहिर सरकार। तो उन्होंने लिंक हमें लिखा, जी कमेंट किया, प्लीज रिएक्ट ऑन बांग्लादेश मेड 97% ऑफ हिज मेडिसिन एंड एक्सपोर्ट 140 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जो कि बहुत अमेजिंग है यार। मतलब कि 97% वो जो अपनी मेडिसिन है उनको एक्सपोर्ट कर रहा है 140 कंट्रीज इन द वर्ल्ड में। तो एक बहुत अच्छी बात और बहुत फर्स्ट टाइम मैं मतलब कि आइडिया हुआ। तो वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट के हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और साथ टल्ली को दबा दें, बेल आइकन टल्ली दबा दें साथ। तो देखते हैं आज का वीडियो। तो हियर वी गो। Started suffering from stomach pain. Her doctor prescribed her some tablets. One packet costs just 83 cents and lasts 2 weeks. After paying rent, gas bill and water bill, it's affordable. It's within my budget. ढाका की रहायशी हैं among the majority of Bangladesh's 165 million people who only use medicines that have been manufactured inside the country. Over the past 20 years, generic drug production here has grown 30-fold. Bangladesh is allowed to copy drugs already on the market without having to pay costly fees to the patent holders. It's a concession given to the country by the World Trade Organization due to its least developed country status. Bangladesh now imports just 3% of the drugs it needs, far less than many other countries. Pakistan imports 30% of its medicines, Vietnam 60% and Singapore 80%. The industry has become one of the most advanced sectors in Bangladesh. As many as 600,000 tablets are produced in this factory every hour, using state-of-the-art equipment and highly trained staff. More than 500 types of medicine are now made in Bangladesh, including cancer drugs and insulin. And prices are much lower than the originals. Sofosbuvir, originally made by Gilead Sciences, is a drug used to treat hepatitis C. Each tablet costs $1,000, but the Bangladeshi version, Opetavir, costs just $5, and a single anti-cancer tablet, erlotinib, originally manufactured by Roche, costs $60. The Bangladeshi version, Erloken, is $3.50. Huge difference. Are on their way. We have almost 70% working the research and development group. One for formulation and the analytical. So every year we have, from inception, I would say more than 50 to 60 new product launching in local market. The industry accounts for a modest 3% of all exports. Revenues last year amounted to $125 million. But foreign sales are growing at a rate of 24% per year, despite competition from India and China. And a number of countries, including the UK, US and Turkey, have formally recognized Bangladesh's rigorous testing process. This is a popular anti-hypertension drug. It's been through the entire production process, but will be tested one last time before being exported to at least 15 countries, including the Maldives and Sri Lanka. The government has imposed price caps on all medicines, so ordinary people can afford them. The plan now is to capture 10% of the global generic drug market within the next 7 years, a goal Bangladesh is well on the way to achieving. Shamim Chowdhury, TRT World, Dhaka, Bangladesh. And Shamim's here in the studio with us again. Hello there, Shamim. So, Bangladesh has done well in the generic drugs industry because it's been exempt from having to pay patents to the people that produced them, that invented them. But a lot of other countries also have the same exemptions. What's Bangladesh doing that some of these other countries are not doing right? There are other factors that come into play as far as Bangladesh is concerned. One is that there's a ban on the import of any foreign drugs, and that is to cut down competition for local producers. So even if you wanted to, you couldn't buy the brand names in Bangladesh. That's one thing. Secondly, there's a very large pool of potential workers who can help produce medicines. And unlike the case of
of the garments industry, it's not low-skilled workers. These are chemists, pharmacists, biotechnology graduates. So you have a very strong professional pool base from which you can, have working inside these pharmacies to help produce these drugs. And finally, it's a massive market. We're looking at more than 160 million people who all need medicine. So when you have market demand, you are going to get a supply. So it's numbers. A number of factors have gone into the position Bangladesh is in now as far as the pharmaceutical industry is concerned. Those concessions run out in 2033. Then what happens after that? This is something I put to some of the scientists at some of the pharmacy companies that we went to. They're not too concerned because the export rate is growing by about 24% every single year. At the moment, it brings in about 3% of the overall revenue. They expect that to grow much higher. But at the same time, Bangladesh is also producing its own original drugs. There's a lot of research and development going on as far as the industry is concerned, and they're hoping that they may well be able to patent their own drugs in 15 years' time. The general feeling seems to be that it's quite some time away. It's a booming industry. Let's keep doing what we're doing, and we'll cross that bridge when we come to it. Yeah. One of the interesting things in your report that you pointed out there was that huge disparity in the price of drugs. And still, the makers of the generic drugs in Bangladesh are able to make a profit. Yes, they are. It could be a question of piling them high, selling them cheap. Again, it's a huge population. Many people need drugs. If you sell something cheap to many people, you're still going to get a profit. Economies of scale. Economies of scale, But the interesting thing about that comparison is that the makers of the patented drugs, the brand name drugs, are obviously making such a huge margin. Yes, it's quite astonishing. It is quite astonishing, and it does beg the question as to whether there should be Fascinating discussion. We've got more to come through the rest of the week. Tell us very quickly what we've got from Bangladesh tomorrow. So tomorrow we're going to look at the e-commerce business. More than 2,500 e-commerce businesses thriving across Bangladesh. It does have its challenges. There's only 50% of the country has internet connection. Quite a lot of computer illiteracy as well. So we'll be looking at all those issues. Fantastic. Shamim Chowdhury, thank you. ओके फ्रेंड, तो दिस वाज द वीडियो। तो बहुत यार मतलब शॉकिंग है कि नहीं भाई कि 97% बांग्लादेश जो मेडिसिन है वो अपनी बनाई हुई इस्तेमाल करता है और सिर्फ 3% जो है वो इंपोर्ट कर रहा है। और पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड देखें तो पाकिस्तान जो है वो 30% जो है वो इंपोर्ट करता है और 70% खुद बनाता है बिल्कुल। तो यार 97% इज अ शॉकिंग फिगर यार, मतलब कि ब्रिलियंट यार, एक्सीलेंट। मतलब कि इतनी ज़्यादा मकदार में जो है मतलब तमाम टाइप की जो जेनरिक वो मेडिसिन हैं वो सारी की सारी ड्रग्स जितने भी हैं वो खुद वो तैयार कर रहे हैं। और जो कि नहीं भाई उन्होंने बताया कि 125 मिलियन लास्ट ईयर जो है मतलब एक्सपोर्ट से जो बांग्लादेश में की इकॉनमी में मतलब ऐड हुआ है, बांग्लादेश को हासिल किया बांग्लादेश ने 125 मिलियन एक्सपोर्ट से। और 140 कंट्रीज जिनमें मतलब कि एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट और बहुत बड़ी बात है और एक बहुत अच्छी यार खबर है कि इतनी। और पाकिस्तान मोस्टली मतलब इंपोर्ट करता है बाहर से, एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्ट बहुत कम होती हैं। और ये एक मतलब आपकी इकोनॉमी ये बताता है, इधर ये चीज़ बताती है। और इसमें मतलब नहीं भाई ये भी है ना कि इलेक्ट्रिसिटी रेट जो है वो बहुत अच्छा है बांग्लादेश में। एजुकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है, लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो मतलब जो कि बांग्लादेश को एक अलग बांग्लादेश बना देते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त मतलब और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज का यार। ये तो आइडिया ही नहीं था तुम्हें। ये एक्सपोर्ट ही है जिसकी की वजह से बांग्लादेश की करेंसी डीवैल्यू नहीं हो रही, पाकिस्तान की हो रही है। बांग्लादेश की जो इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है, और करेंसी डीवैल्यू हो रही है। बांग्लादेश की जो है वो स्टेबल है, बल्कि डीवैल्यू होने की नहीं हो रही बल्कि ग्रो कर रही है। क्योंकि ग्रोथ रेट तो हमने देखा था, एक वीडियो देखा था, तो 8.2 और 3% जो ग्रोथ रेट है एशिया में नंबर 1 पर बांग्लादेश है ग्रोथ रेट में इन 2020। तो भाई सल्यूट आप लोगों को यार, कमाल। और वी प्रे कि आप ऐसे ही तरक्की करते रहें। और ये जो 3%
3% आप इंपोर्ट कर रहे हैं ना, ये भी बांग्लादेश मतलब 100% अगर खुद की मेडिसिन तैयार करें 100, जो 3% आपको इंपोर्ट करनी पड़ती हैं वो भी ना करनी पड़े, नहीं भाई तो क्या बात है यार। मैं कहता हूँ ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा, और अभी भी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा यार। कोई भी कंट्री मतलब कि 97% अपने कंट्री का बना हुआ मेडिसिन तो इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा, तो आई थिंक कि बांग्लादेश इधर भी लीड पर और नंबर 1 पर है, तो बहुत अच्छी बात है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप मतलब इतना अच्छा यार, शॉकिंग है यार, मतलब बिल्कुल ऐसे एक्सीलेंट है यार, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो थैंक यू फॉर द सजेशन दिस वीडियो, कि आपने ये वीडियो हमें सजेस्ट किया और हमें इसका मतलब इन्फो मिली कि यार बांग्लादेश मतलब जो अपनी मेडिसिन हैं वो 97% खुद बना रहा है, और मज़े की बात कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है मुख्तलिफ 140 कंट्रीज़ में, जो कि ह्यूज फिगर है, बहुत ह्यूज फिगर है। तो ज़बरदस्त ये वीडियो आज का यार, मज़ा आ गया देखने का। आप हमारे चैनल पर जाएं, जो दोस्त हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, बिल्कुल, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अब हम देखते हैं आपको कोई और वीडियो, हमारे चैनल पर जाएं और कोई और वीडियो देखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह ने अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, वस्सलाम।